So let's start. ठीक है जी? Okay. Good evening, everyone, and welcome to the Women Wellness session today. As we all know that on the first Friday sessions of Modern Women Council meeting, we discuss women health issues, and we try to find solutions, and we try to discuss and find out answers to our various problems. So Dr. Jaspreet Sandhu is already here with us. Dr. Jaspreet Sandhu is an expert urologist. He has been educated in India. He was a student of Armed Forces Medical College, and he has served the Indian Army for many years, and he opted for voluntary retirement when he was at the rank of colonel. So Colonel, we fondly call him Colonel Jaspreet, but here now we call him Dr. Jaspreet because colonel rank is irrelevant in these countries. These days he is based in Bahrain, the country Bahrain, and he's working with the Bahrain Specialty Hospital as an expert urologist. And after completing his master's in surgery, he did his MCH from PGI Chandigarh. I know him personally for the past 36 years, as he is my nephew. And when I got married, he got admission in AFMC Pune, New Delhi, Pune, India. So we met very after many months after my marriage. So मैं इनकी मामी लगती हूँ वैसे, तो ये हमारा रिलेशन है. तो बट क्योंकि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के और हम अक्सर इनसे बहुत सारी कंसल्टेशन लेते रहते हैं, सभी चीजों की लेते रहते हैं. फैमिली में डॉक्टर होता है ना, तो हम उनको घेर के रखते हैं, बिल्कुल आ जाए सही कोई फैमिली में कहीं से डॉक्टर, तो हम कोई भी बीमारी छोड़ते नहीं है बताने को. बट ही हैज लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस. तो ये हमारे साथ इनका बचपन काफी बीता है मेरे साथ, क्योंकि मैं तो नानके हूँ ना, तो इसलिए, और एक मामी हूँ, तो इसलिए हमारे साथ तो अलग किस्म की अटैचमेंट है. बट स्टिल I know him, and I have utmost respect for him for his devotion and dedication. जब ये PGI में थे तो हम देखते थे इनको के OPD के बाद कितने कितने आवर्स ये लोगों के घरों में जाकर जो पुअर होते थे स्पेशली, खुद जाकर उनकी देखभाल करते थे और सेवा करते थे. तो इनके अंदर एक सेवा की स्पिरिट, सर्विस की स्पिरिट बहुत ज्यादा है. तो आई वेलकम हिम. एंड अभी ये अपना सेशन लेंगे. सेशन के बाद हम अपने क्वेश्चंस थोड़े से होल्ड करके रख लेंगे. आई थिंक वो बेटर रहेगा. क्यों डॉक्टर संधू, ठीक है ना? यस आई थिंक. हाँ, तो हम बाद में पूछेंगे. तो डॉक्टर संधू को मैं बता दूं कि ये जो हमारी मॉडर्न विमेन काउंसिल है, ये एक बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है. आप देख ही सकते हो कितनी यहाँ पे ब्राइट और ब्यूटीफुल विमेन यहाँ पर हैं. आज क्योंकि ये विमेन का सेशन है इसलिए, अदरवाइज मेन भी होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हम इसको विमेन काउंसिल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लेडीज हैं, मेन भी होते हैं हमारे यहाँ. और हमारा जो मोटो है वो है एम्पावर्ड विमेन, एम्पावर्ड कम्युनिटीज. तो हम जो काम करते हैं इसमें मेंटरिंग, मोटिवेटिंग एंड मोबिलाइजिंग विमेन एंड फैमिलीज. तो हम कभी भी विमेन को अलोन नहीं मानते, फैमिली पूरी साथ में ही होती है. हमेशा जैसे कहा जाता है कि अगर घर में वुमन एजुकेटेड है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है, घर में वुमन की हेल्थ अच्छी है तो पूरा परिवार खुश रहता है, हेल्दी रहता है, वुमन हैप्पी है तो पूरा परिवार हैप्पी रहता है. तो इस तरह से तो हमारे यहाँ बहुत सारे हम सेशंस करते हैं और बड़े सारे हमारे प्लान्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं. उनमें से एक प्रोजेक्ट ये विमेन वेलनेस का है, जिसमें कि you've been asked, and thank you very much that you have consented to be here. और आप हम लोगों को थोड़ा सा अब ज्ञान दीजिए, बताइए हमारे सिस्टम्स के बारे में, और बाद में हम क्वेश्चंस पूछते रहेंगे आपसे. Thank you. Thank you. Am I permitted to share my screen? Parminder ji, can you give him the share screen option, host option, please? Yeah.
Okay, you are the co-host now. Okay, मैं जा रही. Chalo, okay. Thank you. Yeah, am I audible? Yes, you are. Okay, great. We can see your screen too. Okay. Okay, let me begin by saying an anecdote. As a young child, way back, it was not uncommon to find elderly neighboring aunts or relatives on a visit, starting on a journey of detailed description of their illnesses and finding some sort of a strange satisfaction and compassion after having rattled it out completely. To the chagrin of the competing listeners, the greater the sickness, the greater the satisfaction of sharing. And our mothers, who were a generation down, if unable to wriggle out of the situation, often commenting in Punjabi, "Bas hun inna ne apniyan bimariyan shuru kar deniyan ne." Well, really hilarious, as those same mothers have reached that stage, and the cycle should continue with people of our age as well. On that note, let me start. Good evening, ladies, all gracefully growing old. I must compliment of the Malton Women's Group. At the outset, I would like to thank the organizing committee, especially Mrs. Gurmeet Kaur, to whom I am closely related and associated for the last 30 years. And it seems. So I am known as Meeta Khanna here. Sorry to interrupt you. Okay. No, so many people won't know my Gurmeet Kaur name. Sorry. Okay. And it's indeed an honor for me to be able to speak about these basic issues, considering the middle-aged and the elderly women's health. With the life expectancy increasing, there's a tectonic shift in the population distribution, and a large percentage of women now belong to the post-menopausal age group. Even in this class, a larger percentage is constituted by the elderly, which are above the age of 70 years. The importance of addressing the issues of these groups can be judged by the fact that a separate subject of gerontology or old age medicine is now being offered as a separate course in various universities. And physiology of aging is a separate subject, and therefore treatments which are directed at the adult population cannot be extrapolated to the elderly. With this introduction, I would like to proceed with the presentation, and I would request that this be a two-way interaction rather than a monologue from my side. The content has been purposefully kept very basic, considering the non-medical audience in mind. बिल्कुल. और आप kindly थोड़ा हिंदी भी use कीजिए. Yes, yes, of course. Oh, This is a देखो, wonderful आ गया. statement from Eleanor हिंदी Roosevelt. बोलते जाना साथ में. Beautiful young people are accidents of nature, but beautiful old people are works of art. Just to begin with, Eleanor Roosevelt was the first lady of America at a certain time. I will be basically considering perimenopausal urinary problems, about stress and urge incontinence, infections in postmenopausal women, and the concept of overactive bladder and the effects of chronic illnesses on the kidneys and bladder. दुनिया में जो एजिंग वर्ल्ड है, which means जिनकी उम्र अब लोगों की ज्यादा हो रही है, तो पॉपुलेशन जो है वो पूरी शिफ्ट हो रही है. एक समय था जबकि जो डेवलप कंट्रीज थे उन्हीं में ज्यादातर एजेड लोग रहते थे, लेकिन अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें भी पॉपुलेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से उनमें भी जो है एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है. And there was a study conducted in Japan recently which has mentioned that in 1990 5 लोग जो हैं एक एल्डरली अपने पेरेंट का या किसी रिलेटिव का ख्याल रखते थे, 5 लोग मिल करके 1990 में, जो कि घट करके 2.6 लोग हो गया 2010 में, और 2025 में दिस विल फर्दर रिड्यूस टू 1.8, एंड बाय अबाउट 2060 1.2 persons will have to look after one elderly parent or adult or sister or brother or something like that. So there's a real shift, and our systems have to be prepared and should be able to look after our hospitals and other things. So we are talking about basically urinary problems, and जो आम जनता है उनको तो इतना ही पता होता है कि भाई यूरिन की क्या सेंसेशन होती है और यूरिन कहाँ से बाहर आता है. I mean, with a lot of knowledge about science, people know that there is something called as urinary bladder, and there are 2 kidneys जिनमें से यूरिन निकल करके ब्लैडर में आता है. इसको यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली बोलते हैं हिंदी में.
और उसके अंदर में एक उसका दो काम होते हैं, उसका यूरिन स्टोर करना और एक होता है भाई यूरिन को परमिट करना बाहर की तरफ निकलने के एज एंड व्हेन दी मोमेंट इज अप्रोप्रिएट. तो द एंटायर रिगमरोल ऑफ यूरिनरी problems is ultimately related to the passage of urine, and it can be basically divided into failure to store and failure to void. Failure to store means urine रुकता नहीं है, और failure to void means obstruction होती है, पूरी तरह urine नहीं आता. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, जिसके अंदर में किडनीज, यूरेटर मतलब जो किडनी मतलब गुर्दा जहाँ पे यूरिन बनता है, और यूरेटर मतलब वो पाइप जिसमें कि यूरिन किडनी से निकल करके नीचे आता है, और ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, और यूरिथ्रा मतलब वो पाइप जिसके थ्रू हम फाइनली यूरिन पास करते हैं एज एंड व्हेन द मोमेंट इज अप्रोप्रिएट. तो ऐसा किताबों में लिखा है और स्टडी से पता चला है कि 50 साल की उम्र के बाद से हमारी जो किडनी से यूरिन बनाने की कैपेसिटी है, उसमें there is about 10% reduction. So you find that people who are 70 to 80 years of age, their kidneys may be functioning almost 30 to 40% less than normal because of various illnesses like diabetes, hypertension, old age, etc. और यूरिनरी ब्लैडर में भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं स्टोरेज और इवैक्यूएशन की साथ साथ में उम्र के हिसाब से बढ़ती हैं, और कई बार जो है खांसी करने पे यूरिन लीक करता है, या जब हम यूरिन पास करने जाते हैं हमसे कंट्रोल नहीं होता तो भी यूरिन लीक कर जाता है, स्पेशली इन एल्डरली वुमेन. इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम. तो क्या क्या प्रॉब्लम हम जो है देख सकते हैं, और रादर व्हाट सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स वुड कम टू अ यूरोलॉजिस्ट इन एल्डरली एज ग्रुप वुमेन. दे कैन बी, वो बोल सकती हैं कि भाई मेरा जो पेशाब की धार है वो बड़ी कमजोर हो गई है और ताकत लगानी पड़ती है तो भी यूरिन नहीं निकलता, और मुझे लगता है मेरे को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, या मेरी ब्लैडर की कैपेसिटी छोटी हो गई है, और कुछ बोलते हैं कि मुझे यूरिन का पता ही नहीं चलता वो कब निकल जाता है, बाद में जब देखती हूँ तो अंडरगारमेंट्स गीले होते हैं, और बार बार जाना पड़ता है और कंट्रोल नहीं होता पूरी तरह. और जब उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो देखते हैं कि भाई यूरिन ब्लैडर में बहुत सारा यूरिन जो है वो पीछे छूटा हुआ है. आई होप आई एम क्लियर. यस यस, ओके. सो ऐसा लिटरेचर में लिखा हुआ है कि जो ये यूरिनरी सिम्टम्स हैं ये 40 से 50 साल की उम्र के बाद से ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, ऑल दीज सिम्टम्स. एंड as the other comorbidities like diabetes, hypertension, heart disease, neurological problems, as they start, so they will also have an effect on the urinary system. It is not an isolated thing कि भाई मेरे को केवल यूरिनरी ब्लैडर में ही प्रॉब्लम है. लेकिन जब भी पेशेंट हमारे पास में आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको सबसे पहले ही कुछ पहला सवाल पूछने के पहले ही कि पहले आप बताइए कि आपको और क्या क्या बीमारियां हैं, डायबिटीज, IHD, हाइपरटेंशन, neurological illness, Parkinson's disease, and many elderly people are suffering from these, and they will also have some effect on the urinary problem. So it can't be really compartmentalized. That is why when you go to a urologist, he first asks for the history and then utilizes it to come to inference with respect to your complaints, and then he would like to do a certain number of tests to come to a conclusion, then offer some sort of a treatment. Almost 20% of women and 10% of men more than 65 years of age report some degree of incontinence of urine, which means leakage, which is involuntary and inadvertent. And it's a major health issue, and it has been found by studies that leakage of urine and urine-related problems are an important cause of institutionalization of elderly patients, because the attendants are not able to sort of look after them at home because of round-the-clock involvement with the urinary issues. Well, let's cover these topics. So first and foremost, as I mentioned, जो पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉजल यूरिनरी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, जैसे कि हमारा जो जब मेनोपॉज होता है उस समय ओवरीज में से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो निकलना बंद हो जाता है, एंड उसकी वजह से ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुब्रिकेशन ऑफ द जेनिटल पैसेज. ऑल्सो इट कीप्स द
the moistness of the urinary passage, that is the urethra, and the genital region. Fine. So there is dryness, which is appreciated by the patients. There could be narrowing, यानी कि जो पेशाब की धार है वो कई बार उनकी कमजोर होनी शुरू हो जाती है पेशेंट्स की, और they have to start straining, तो जोर लगाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए. And many such women immediately after menopause, menopause is also associated with certain systemic symptoms, जैसे कि उसमें hot flushes शुरू हो जाते हैं ladies को. This is a very commonly accepted fact for which many women will be taking hormone replacement therapy. Also, because of lack of estrogen, sometimes there can be reduction in the calcification in the bones, which is called as osteoporosis. Local manifestations में urinary passage में it is called as urogenital atrophy. So generally the patients would first go to the gynecologist with these symptoms, and the gynecologist would examine, do a local examination to rule out any prolapse which could be there, and then the patient finally lands up with the urologist. So this lack of estrogen can also predispose women to repeated episodes of urinary tract infection, and which उसमें कई बार पेशाब में जलन होना, बार-बार यूरिन आना, कंट्रोल ना कर पाना. As I told, ultimately whatever may be the etiology or the cause, almost all the patients would present with these few symptoms, and then sometimes it is on the clinical acumen of the urologist to find out as to what could be the possible problem. So generally, so patients who have not been advised hormonal replacement therapy in the early part of their postmenopausal phase, who did not have too many symptoms and have got only local symptoms, we advise them. Conjugated estrogen creams are available in the market, and we advise them to apply them. So that sometimes helps to open up the urinary passage, to improve the flow, and it also helps with cohabitation with their partners, and improves the overall urinary quality of life by reducing the frequency, urgency. उसके बाद में जो है एक बड़ा और सी प्रॉब्लम है जिसमें यूरिन लीक हो जाता है ओल्ड एज में, या as a result of multiple childbirths, not only in old age, even pre-menopausal. And so this leakage of urine is called as incontinence of urine in medical parlance, and it can be of various types. एक होता है कि जरा सा खांसी आई, छींक आई, सीढ़ी चढ़ी आपने, या आपने बाल्टी उठाई, कोई भारी सा वजन उठाया, and suddenly your clothes will become wet without having the urge or sensation to pass urine. Or that is called as stress incontinence. Stress means जरा सा आपका इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा तो यूरिन जो है वो बाहर आ जाता है. So उसका कारण ये बताया गया है कि जो हमारे पेल्विस के अंदर में एक हमारे अंदर मसल का एक चादर टाइप की होती है, which is like a diaphragm. So due to repeated childbirths, or due to obesity, or due to various other problems, the support of the urinary bladder is lost, and the urinary bladder comes down from that muscular chadar, as a result of which whenever the intra-abdominal pressure rises, these patients can manifest with the incontinence of urine. And it is not a part of aging as commonly thought. Like many women fail to report the condition out of embarrassment or the mistaken belief that they are alone, or that incontinence is a natural part of aging. In fact, it is very common. Even when I came to Bahrain, I spoke to a lot of elderly women who come for some other problems. They have a problem, but most of them would not, with a predominantly Muslim population here, they wouldn't really open out and even come out with their complaints. We have a mixture of Arabic, Pakistani, Indian, Sri Lankan, Bangladeshi patients here. So the story is same, human physiology is same, So ultimately, many women who have born multiple children are likely to have this problem, and 5 times as compared to men, and especially as related to pregnancy and childbirth. So it has been found that जिनके cesarean deliveries हुई हैं उनको ये problem कम होती है, जिनका labor का period बड़ा ज़्यादा रहा पहले या दूसरे बच्चे के समय में, उनको तो वो मतलब 30-35 साल की उम्र के बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. And so much so that they can't really, exercising, which is required in the especially perimenopausal period, some sort of an exercise is required to prevent bone loss. That exercise also they cannot do because of,
leakage of urine, which becomes very embarrassing. Recently, a young woman has come to me, about 42 years of age. She has 3 children, and she complained that when she does trampoline with her children, she leaks, and it's very embarrassing. So we evaluated, and we have treated her. It's a treatable problem. The stress incontinence thing, ये इसको हम ठीक कर सकते हैं. इसके लिए अगर हमें लगता है कि भाई दवाई से फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं. But invariably, patients who are able to hold on to their symptoms for a long time, ultimately they will need some sort of a छोटा सा उनको एक प्रोसीजर होता है, ऑपरेटिव प्रोसीजर, उसको हम बोलते हैं मिड यूरिथ्रल टेप. उसको लगाने से this problem can be solved in 95% of the patients. And I want to basically bring this point across to all the elderly women who are there in the podium, in the audience, that this is a treatment which this is a thing which can greatly improve your quality of life. And definitely, I'm surprised, like what Dr. Meeta has told, that it takes about 5 months in Canada to be able to reach, super specialist. Whereas in India, you can, just fix up an appointment in 2 hours time. And even here in Bahrain, anybody who comes, we make sure and, ask all sorts of questions to see whether whatever is treatable from that perspective is available to us. And, women can often joke. They say that I can laugh, cough, sneeze, and pee all at the same time. Wow, nice meme. Yeah. It's a good meme. Yeah, how do I know I have hit the middle age? In preparation for a big sneeze, I cross my legs really hard and hope for the best. This is the thing which, in addition to the stress incontinence, there is something called as urge incontinence also. Urge incontinence means urgency. It means inability to postpone urination. जैसे ही वो पेशाब की आदत हुई, एकदम से अगर बाथरूम नहीं गए तो कपड़ों में यूरिन निकल आता है. So much so that you don't have time to get up from the bed to go to the bathroom. So that is called as urge incontinence. That's also common in peri and postmenopausal women. So many patients do come to us with urge incontinence. There are many factors. It could be due to overactivity of the bladder, and overactivity of the bladder, which I will be covering subsequently, also means कि भाई हमारी जो पेशाब की थैली है उसमें approximately 250 to 300 ml तक urine उसमें भर जाना चाहिए. The urinary bladder should be able to hold that much of urine without causing abnormal sensation and a sensation to the brain that I am full, go and pass urine, go and pass urine. And the brain normally has an impact if the surroundings are not good, if there is no bathroom in sight. अगर bathroom नहीं है तो brain का urinary bladder के ऊपर control रहता है. Okay, hold for some time till the time you reach a place where it's possible to void. But that is lost in various some issues like neurological problems, Parkinsonism, excessive diabetes, poor control of sugar, और उन सब patients में भी urge incontinence common होता है. In fact, it can be a manifesting symptom of patients who have got diabetes. So this is an adage which says that don't quit exercising because of urinary incontinence. So like I told you, many women will stop exercising, going for walks and things like that. So these things are to a certain extent curable. So this is just a diagram which shows what sort of a minor operative procedure we do. तो ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें ये आपका urinary bladder है और ये एक नायलॉन टाइप मटेरियल होता है, उसकी मेश होती है. तो हम छोटा सा इसमें थाइज में एक छोटा सा इंसिजन लगा करके और वजाइना में छोटा सा इंसिजन लगा करके हम स्टेप को डाल देते हैं. इसकी वजह से ये जो यूरिनरी पैसेज है ये ऊपर उड़ जाता है. और जो यंग एज में जो सिचुएशन होती है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो पेल्विक फ्लोर के ऊपर एकदम मुस्तैदी से बैठे होते हैं. It is something like that, and by the time the patient leaves the hospital next day, is almost 95% cured. And there is no age limit कि भाई मैं तो अब 70 साल की हो गई हूँ और मैं तो 75 साल की हो गई, मैं तो ये नहीं करा सकती. About 3 years ago or 5 years ago, when I was in a place called Lucknow in India, there was a 70-year-old very smart woman, and she had rectal cancer, and she had been given radiotherapy. तो रेडियोथेरेपी के बाद में ये सब एरियाज जो होते हैं बड़े डेलिकेट हो जाते हैं. बट शी हैड दिस वेरी significant problem. She could not swim. She was really in a bad state, and she asked for help. And we evaluated her,
and we were able to put this tape, and thereafter she improved considerably. So it's possible to sort of cure certain issues. उसके बाद में जैसे हम ज्यादा बात नहीं करूंगा, अभी मैं क्वेश्चंस लूंगा, but just 2-3 minutes more. So infections, again, infections are common in elderly people. अब जैसे कि ओल्ड एज को डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि मिडिल एज बोलते हैं 40 to 60, एंड ओल्ड एज में भी 3 कैटेगरीज आ गई हैं, young old age, middle old age, and old age. So 80 to 90 years of age is old age. So you can't tell a woman who's 55 or 60 that you are now old and elderly. But the physiology, you have been born 60 years ago, so all your body will definitely is trying to become old and hold you back. So infections are a common problem. और स्पेशली जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं किसी दूसरी बीमारी के लिए भी, हॉस्पिटल में जाने के बाद में इट्स वेरी कॉमन टू हैव urinary tract infections, and sometimes these asymptomatic infections can become life threatening, especially in people who are very elderly, 85, 90. They will have asymptomatic, उनको कोई symptom नहीं होते हैं, and they only have fever, and when they are treated for UTI with broad spectrum antibiotics, most of them will return back home totally cured. ओवरएक्टिव ब्लैडर का मैंने बता दिया है, और जैसे कि जो दूसरी बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब का जो है हाइपरटेंशन और डायबिटीज का जो असर है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है और किडनीज के ऊपर भी होता है. तो किडनीज में जो है उनका फंक्शन कम हो जाता है, कई बार शुगर निकलती है, वो ढंग से उसको जो है रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं. कुछ दवाइयों की वजह से भी जो है यूरिन में शुगर की मात्रा जो है बढ़ जाती है, उससे भी जो एंटी डायबिटिक दवाइयाँ होती हैं उससे भी पेशेंट्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है. और जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है 30-40 साल से, उनका जो यूरिनरी ब्लैडर की सेंसेशन होती है वो कम हो जाती है, तो उनको अप्रिसिएशन नहीं होता कि भाई मेरा ब्लैडर भर गया है, या मैं सुबह से अभी 5-6 घंटे हो गए मैं यूरिन पास करने नहीं गई हूँ. और कई बार पेशेंट्स को 10-10 घंटे हो जाते हैं. Then if such patients come to you and you examine them, you find that the urinary bladder is grossly distended like a pregnant uterus, and so these things are there, and this inability to completely empty the bladder can give rise to swelling of the ureters, and it can also affect the kidneys. I think मेरे हिसाब से it is better to ask a few questions now, because whatever I had to say I have told, beyond which it becomes too complicated and too language is too medical. Right. It is better to discuss. जी बताइए नरेंद्र जी. Thank you. आप ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो डॉक्टर साहब. Okay, stop share.